Okay, so let's start. So the most important connectors for task 2 are for listing points. Okay, I hope you know what I mean by connectors. Connectors are nothing. Um, First of all, I want to tell you what are good connectors. The definition of good connectors. Let's start with that. A good connector is a connector which makes reading easier. So a job of a linking word is to make reading easier to us. When we read something, it makes more sense to us because of the linking word, but they do not grab a lot of attention. Like they don't, like they are not complicated words, they are not words which focus all the attention on themselves. No, they don't bring attention to themselves, they just make reading easier. So when I read something, if there are connectors in it, it makes my job easier. I'm able to understand better. But these connectors in itself do not grab attention. If they are grabbing a lot of attention, then they're not good connectors. That's the basic principle with connectors. Now, I have divided them into 4 sets. The first set is listing points. The second set is for giving an example. The third set is for contrast. And the fourth one is for conclusion. So we'll try to cover all the 4 sets today. It's a very short class, but it'll give you a good idea. Okay. So the first set of connector that I want to teach you is listing points. Listing points is nothing but, for example, let's imagine you have an essay and you have to describe reasons in the essay, and you have 3 reasons. So you have to give a connector or a linking word before each reason. This is what I said, listing points. These are the connectors that are used for this purpose, listing points. So normally I use these connectors like firstly, secondly, or the second reason is that, the second advantage is that if I'm giving advantage, the main reason is that, another reason is that, to begin with, in addition, furthermore. I'm just telling you all the connectors and we'll make it a bit more formalized at the end. So just hold on. Okay. Furthermore, in addition, moreover, also, to add to it, besides that, when you're giving the last point, last but not least, and finally. So all these words are used as connectors, and I've given the examples here, like all of these. So now how do you prepare for this? Now how do you learn these connectors? I would say make 3 sets. Why 3 sets? Um, so for an essay, for example, you have an essay in which you have to give reasons and solutions. So you should have at least 2 sets of connectors, one for the reasons and one for the solutions. So like that, I want you to have 3 sets for listing down connectors prepared. Like that is how you should prepare. If I have to list down points in one paragraph, I'll use the first set. If I have to list down points in the second paragraph, I'll use the second set. And by chance, if I have to make another paragraph, I'll have a third set ready as well for a backup. So that's how I divide them. Now the first set for me, I normally use these connectors. Firstly, this is my first set. So I prepare it like this. If you want to make some changes, you can. So basically हम एक 3 सेट्स बना रहे लिस्टिंग पॉइंट्स के लिए. हमने पहला सेट ये वाला करना है कि जब मेरे को पहली बार लिस्ट पॉइंट्स करने हैं, कोई रीजंस देने, तो मैं ये वाला कनेक्टर सेट यूज करूंगा. Okay. So the first set would be firstly, um, then you can say the second reason is that, or the second advantage is that, or the second drawback is that. I don't use the word secondly. I just want it to be slightly different. That is why I don't use secondly. In fact, I try to use something like the second reason is that, or something like that. Okay. And remember, after that, there is no comma here. So you have to write your point afterwards. Don't put a comma here. And then I use finally. So this is my first set. If I have more than 3 points in this set, I use any connector in the middle, like besides that, as the for the third point. So besides that, finally. So I don't use thirdly. I don't use that because then it seems kind of, childish, and I feel like it's kind of feels like connectors are grabbing attention. I don't want to do that. So this is my first set of connectors. Wherever you use connectors for listing down points, I would use this set. If you have any questions now, like what I'm doing, you can ask me. Otherwise, this is one set of connectors that I use when I'm going to give points. जो पहला point लिखना है उससे पहले firstly लिखना है.
Second point से पहले the second reason is that or advantage. Third point if you have besides that, and fourth point finally. If you have only 3 points, you can leave the besides that and directly jump to finally. Yes. Somebody had a doubt? Please ask if you had a doubt. Okay. So if you use them, please make sure that you don't make any grammatical mistakes. Yeah. सर जैसे फर्स्टली है तो उसके बिसाइड में हम लिख सकते हैं द फर्स्ट रीजन इज दैट द या सेकंड। पर मैं सेकंड के लिए ऐसे करता हूँ, तो एक बार ऐसे करना, बार बार करोगे देन दैट लुक्स ऑड। सो एक बार फर्स्टली कर दिया, फिर सेकंड रीजन इज दैट कर दिया, या फिर द फर्स्ट रीजन इज दैट कर दिया, फिर सेकंडली कर देना। यू गेट द पॉइंट, यू कैन डू एनीवेज। आई जस्ट लाइक टू डू इट वंस। आई लाइक टू I want to tell them that my command over English is good enough that I can change the form easily. I don't get confused by that. I can make it firstly, or I can make it second reason is that, I can make it first reason is that, secondly. I'm comfortable doing it. That's what I'm trying to show the examiner. Is it clear? मेरे को बार बार सेम नहीं करना, मेरे को एक बार फर्स्ट रीजन इज दैट फिर सेकंड रीजन इज दैट, वैसे नहीं करना। मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस लाना होता है। मेरे को I feel I'm more comfortable doing it, so why not show the examiner that I'm comfortable doing it? Clear? अच्छा, यहाँ पे एक गलती होती है। A lot of you have a habit of putting firstly before the first paragraph. Before the paragraph, not before the first point. Like a lot of you start your paragraphs by writing firstly. Don't do that. Firstly should come before the first point. It normally comes in the second sentence of the body paragraph, not the first sentence. First sentence में भी कई बार आ जाता है, पर हर बार नहीं आता। अगर first sentence में ही first point है तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। So please make sure that you use it correctly. You use it at the right point, not to show that ये पहला paragraph है. You're not using firstly to show the examiner that this is the first paragraph. You're using firstly to show that this is the first point of that paragraph, like the first reason, the first advantage. It's not to show that it's the first paragraph. Remember this. Okay. Is it clear? This first set of connectors for listing down points? Acha. Second set, it's a second thing I want to say. It's also the most powerful set for me. So जहाँ पे मतलब अगर I'm talking about disadvantages ज्यादा हैं किसी चीज के, तो मैं जो चीज मेरी more powerful side है ना, मैं उसके साथ ही यूज करता हूँ। I don't use it for the lesser side. I use it for the more powerful side. जो मेरे को जहाँ पे मेरे को झुकाना है। तो अगर एक ऐसे है जिसके अंदर मेरे को डिसएडवांटेजेस ज्यादा लिखने एडवांटेजेस से, आई एम गोइंग टू यूज दिस सेट एट दैट पॉइंट बिकॉज दे ग्रैब लाइक they're more powerful as connectors, I would say. So I want to use that powerful approach where my main side is there. I don't use it on the weak side. मैं weak side पे firstly वाले set of connectors use नहीं करता हूँ। उसके लिए अभी और sets आने वाले हैं, you can use that, you can use them there. Can we move forward to the second set, or anyone has any doubts here? Okay, so a lot of you joined in the middle. So a quick recap मैं कर रहा हूँ, इसके बाद में नहीं करता क्योंकि okay. So let's just keep a quick recap. Let's do a quick recap. So we are doing connectors for listing points. ठीक है? अब इतने सारे connectors हैं. What I want to tell you is कि मैं ना इनको ऐसे नहीं prepare करता, मैं इनके sets बनाता हूँ. For example, what do I mean by a set? A set means, for example, I have to discuss reasons and solutions in one essay. तो एक सेट में यूज करता हूँ रीजंस के लिए, एक सेट में करता हूँ सॉल्यूशंस के लिए। मैंने ऐसे अपना काम डिवाइड करा हुआ। आई विल हैव वन सेट फॉर रीजंस, वन सेट फॉर सॉल्यूशंस। यू कैन मेक चेंजेस इन द सेट्स। आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली कॉपी माय सेट्स, आई एम जस्ट सेइंग you can make those sets. Ultimately you're going to write one paragraph, like one essay. You're not going to write 10 essays. You don't have to show off like 10 different sets. तो मैंने ऐसे 2-3 सेट्स अपने प्रिपेयर करे हुए हैं। आई हैव मेड 3 सेट्स। अगर मेरे को कनेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं, मैं वो 3 सेट्स के यूज करता हूँ फॉर लिस्टिंग डाउन पॉइंट्स। लिस्टिंग डाउन पॉइंट्स का मतलब, आई होप इट इज क्लियर। व्हाट आई मीन इज, फर्स्ट यू आर गिविंग द फर्स्ट रीजन, देन द सेकंड रीजन, देन द थर्ड रीजन। तो ये जो पॉइंट्स लिस्ट डाउन करने हैं, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, इनके लिए क्या कनेक्टर्स है, मतलब हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो मेरा पहला सेट, आई हैव कवर्ड दिस।
I do firstly, then I don't do secondly because I want to show off my command over the language that I'm comfortable saying the second reason is that instead of saying secondly. तो मैं ऐसे कर लेता हूँ. Then if I have a third point, I use besides that. If I have 4 points, I use besides that. If I have only that 3 points, I directly jump to find. सेकेंड थिंग मैं इस सेट के बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेरा सबसे पावरफुल सेट है. सो ये मैं अपनी मेन साइड के लिए यूज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स एन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे एंड माई एडवांटेजेस आर मोर, आई यूज दिस विद एडवांटेजेस नॉट विद डिसएडवांटेजेस. तो ये मैं अपनी मेन साइड के लिए करता हूँ बिकॉज दिस इज माई मोस्ट पावरफुल सेट. बिकॉज यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन होती है मेरे पॉइंट्स की. और मेरे को ना एग्जामिनर को बताना है कि मेरे पॉइंट्स ज्यादा हैं, जब एडवांटेजेस ज्यादा है आई वांट टू क्लियरली टेल हिम. और वो ना ऐसे पढ़ेगा ना, उसको क्लियरली दिखेंगे मेरे 4 पॉइंट्स. हिल रीड फर्स्टली, क्लियर अटेंशन जाएगा फर्स्ट पॉइंट पे. सेकेंडली के साथ अटेंशन जाएगा, सेकेंड रीजन इसके साथ जाएगा अटेंशन. सेकेंड रीजन की जगह यहाँ पे सेकेंड एडवांटेजेस दैट आ जाएगा. बिसाइड्स दैट फाइनली दे ग्रैब अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द सेट. मतलब बहुत ईजी हो जाता है पढ़ना. सो आई यूज इट फॉर माई मेन साइड. थर्ड मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एक गलती होती है. A lot of good students, and even I did that when I was a child, when I was younger. I use this connector to list to show that it's the first paragraph. ये paragraphs के लिए नहीं होते connectors. These are only for points. Don't use it at the beginning of the paragraph. Start using them from the second sentence when you're going to say ये पहला reason है. So first you're going to say there are many reasons or something like that. Then use it firstly. Don't use it in the first line. Firstly, there are many reasons. Don't do that. There are many reasons. The second sentence will start with firstly. So make sure that the usage is correct. And another common mistake, grammatical mistake that students make is after that they put a comma. So I just want to remind everyone there's no comma after that. Please don't put a comma here. That will it's a grammatical mistake. That के बाद comma आता है at one or two places like after that. There's a comma after that here. I'm not saying everywhere that के बाद comma नहीं आता, but जो मैं आज connectors करा रहा हूँ उनके बाद नहीं आता है. So don't put a comma there. यहाँ पे बस वो सेंटेंस का फ्लो तुमने चेक करना है, ग्रामेटिकली फिट करवाना है. ओके, सो आई होप देयर आर नो डाउट्स. गुड इवनिंग. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेट ऑफ connectors. Okay, so let's move on to the second set. Here, if I use this set because यहाँ पे ना ज्यादा grammatical mistakes होने के chances नहीं होते. So my second set starts with to begin with. So instead of firstly, now I'm going to use the connector to begin with. Then after that, I say something else like apart from this, or another reason is that no comma. In addition, if I have a third point, and lastly for my fourth point. So यहाँ पे मेरे ये four connectors हो जाते हैं जो मैं use करता हूँ. To begin with, to show the first point. Another reason is that for the second point, in addition for the third point, and lastly for the fourth point. और अगर तीन होंगे तो एक in addition you can cancel out. Another reason you can cancel out any of the connectors in the middle you can remove if you have less than 4 points. So you can do that. So this is my second set of connectors for listing down points. I don't like to repeat connectors, so please don't repeat connectors. Just use it like that. Okay. Anyone has any doubts, please ask with these connectors. So we can either use the first set or the second set, right? सर सर हाँ जी, बताओ. यस. सर जो भी आपने ना बोला था कि हाँ. सेट रीजन और ना सॉल्यूशन, हाँ. ना सर जी सेट नंबर ना फर्स्ट में, तो फर्स्ट सेट नंबर फर्स्ट रीजंस में के लिए यूज कर लूंगा. सुनो, ओके. एंड रीजन और सॉल्यूशन के लिए ना होगा यूज. सेकंड सेट यूज हो जाएगा ना सोल्यूशन के लिए. नहीं, हाँ. एक्चुअली रीजन और सॉल्यूशन के लिए मैं ना फर्स्ट सेट ना कर लूं यूज, चाहे अरे रीजन चाहे तो रीजन हो चाहे एक सेट. सॉल्यूशन हो. अमित, रीजंस के लिए तू एक सेट यूज करेगा ना, यू यूज वन सेट. यस मैम.
ठीक है, जैसे अब रीजंस तूने बता दिए, फर्स्टली, सेकंड रीजन इज दैट, बिसाइड्स दैट, फाइनली यस तेरे सर। रीजंस खत्म हो गए। यस सर। अब तूने सॉल्यूशंस लिखने हैं, तो सॉल्यूशंस के लिए तो सेकंड सेट यूज कर ले। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं ना कि क्या? सेकंड सेट रीजंस के लिए यूज कर लें और फर्स्ट बिल्कुल कर सेट सकता है, सॉल्यूशंस बिल्कुल, के ये लिए। तेरी मर्जी है, तूने किसके लिए करना है। ठीक है, तो ओके जो सर, मर्जी कर धन्यवाद। सकता है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एनी सेट ऑफ कनेक्टर्स यू कैन यूज एनीवेयर, देयर इज नो हाँ कंडीशन। जी सर। पर यहाँ पे देख, जो भी यूज करेगा वहां पे ये वाला वर्ड बदल लेना, जैसे यहाँ पे रीजन लिखा है, तो अनदर, लाइक, Another solution is that हाँ, ऐसे करके ये चेंजेस देखो करने पड़ेंगे। अनदर ड्रॉबैक इज yes, दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस, यू हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस हियर, मेक दोस चेंजेस, बट यू yes, कैन यूज देम एनीवेयर। इज इट क्लियर? yes, sir. Okay. Yes, sir. Now I come to the third set. The third set is third set में मैं use करता हूँ, the main reason is that, the main reason is that, then apart from this, and furthermore, एंड वैसे ना आते आते थर्ड सेट बहुत कम यूज होता है, सो आई डोंट वरी अबाउट दिस मच दैट मच, मतलब इतना ज्यादा वरी की जरूरत नहीं है। ये आते आते बहुत कम यूज होने लग जाता है। देयर आर वेरी फ्यू एसेस जहाँ पे तुम्हें तीन सेट्स की जरूरत पड़ती है। वन वन प्लेस इज डिस्कस ऐसे, or an essay which where you have to give the reasons and then you have to decide whether the advantages, when you have to also say whether the advantages are more or disadvantages are more। बहुत कम ऐसे ऐसेज होते हैं जहाँ पे थर्ड सेट होता है, पर होता है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, एंड दीज आर माई थर्ड सेट ऑफ कनेक्टर्स। यहाँ पे मेरा फाइनली कोई पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे आते आते कम पॉइंट्स ही होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ। द मेन रीजन इज दैट अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट्स इट। ज्यादातर दो पॉइंट्स ही होते हैं और थर्ड पॉइंट तक आता है। और इसके अलावा भी पॉइंट हुआ तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज ऑल्सो, यू कैन पिक अप, or you can pick up more over, or you can pick up to add to it, you can pick up these words if you want to, but इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लिंक लिस्टिंग डाउन पॉइंट्स के लिए इतने इनफ है, you don't need to have more than this। Is it clear? Okay. yes, sir. Okay. Now let's go to the next one. The next set of connectors is to give an example. To give an example, जो मेरा मेन कनेक्टर होता है वो होता है फॉर एग्जाम्पल। बट रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाती है। My point ends and this starts with a new sentence. I just wanted to tell you this, ये connector मैं वैसे कराता ही नहीं हूँ ज्यादा। I just wanted to tell you this. It does not join sentences. Do not put for example in the middle. It does not work like that. एक पूरा नया सेंटेंस मिलेगा, उसके साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। And for example का another synonym is to illustrate. Illustrate also means to give an example. So you can use this form also. For example or to illustrate. My third word that I use just to give an example, but example नहीं होता, तो अच्छे से किसी पॉइंट को समझाने के लिए बेसिकली फर्स्ट आई राइट डाउन अ पॉइंट, इन अदर वर्ड्स कह के मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। सो दिस कनेक्टर exactly doesn't give an example. It gives, like, you explain the points in some other words. Like you use some other words, you explain it in detail. So for example, I'll give you a point, एक example देता हूँ। देखो, जैसे ओल्ड एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो इसका क्या ड्रॉबैक हो रहा है? नाउ फॉर मी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे। सो so I would say the secondly, I would like the increasing old age population has a negative impact on the economy. Now, I want to explain this further in other words. I'm explaining ये कि negative impact कैसे हो रहा है। तो in other words, तो मैं यहाँ पे in other words लिख के क्या करता हूँ? I explain the point. In other words, अब my point here is, in other words, जब old age population increase होती है तो pension burden बढ़ता है, और जो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज वो कम होते हैं। सी ओल्ड पीपल डोंट अर्न, व्हेन दे डोंट अर्न दे डोंट पे टैक्सेस, एंड बल्कि गवर्नमेंट को उनको पेंशन देनी पड़ती है। सो गवर्नमेंट का पेंशन बर्डन भी बढ़ता है और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी कम होता है, तो इट इज नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी। तो मैं इन अदर वर्ड्स करके ये बात को समझाता है। इन अदर वर्ड्स, as people become older, this they start like the tax revenues for the government decrease, and the pension burden on the government increases.
So this has a negative impact on the, economy. इसको ऐसे समझोगा. तो in other words is used just to explain that point in other words. मतलब थोड़ा सा और explain करने के लिए. उसी point को किसी और words में explain करने के लिए मैं use करता हूँ to simplify a point. जब पहले कुछ complicated लिखा हो या अच्छे से explain ना कराओ, तो in other words लिख के मैं उसको explain कर देता हूँ. So ये मेरे 3 connectors हैं जो use करता हूँ मैं for listing, for giving an example. Just to tell you, they don't join sentences और ये सारे full stop के बाद आते हैं. None of them, please do not do it like this. Comma, for example, doesn't work. Grammatically, it will be wrong for you. It doesn't work like that. ठीक है. बाकी फिर एग्जाम्पल ये कैसे नहीं वर्क करते? मतलब ये सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं कर रहे. You get the point. Like you have to start a new example. Like for example, like let's see. Faster public transport um, can help in reducing pollution. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में पोल्यूशन लेवल्स फॉल हुए हैं आफ्टर द कमिंग ऑफ मेट्रो. तो अब ओके एग्जाम्पल दे सर, रहे ये हैं. कैसे नहीं यूज होने? यूज वो आप दो लाइनों को ना जोड़ने के लिए? हाँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स यूज इट लाइक दैट ना. ऐसे कॉमा के साथ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट्स अ न्यू सेंटेंस, इट डजंट जॉइन द सेंटेंस. यू गेट द पॉइंट. प्रीवियस सेंटेंस को ज्वाइन नहीं करना. पॉइंट खत्म होगा, उसके बाद हमने एग्जाम्पल देनी है. तो वी गिव एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, नया नया सेंटेंस स्टार्ट होगा. ओके ओके ओके. So you can't put it in the middle of a sentence like that. It doesn't work like that. Is it clear? अभी तक सारे इजी हैं. जो कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं ना, वो सारे कंट्रास्ट वाले हैं, वो बाद में आने हैं. अभी तक दीज आर प्रिटी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो टू गिव एन एग्जांपल, ये वाले कनेक्टर्स यूज होते हैं. These are the connectors that I end up using. If you think of any other one, you can discuss them. But these are the ones that I probably would say. Yeah, Chairman, what's Sir, your can we use connector in introduction in task 1 or task 2? in task 1, say in a discuss essay you use it, but I don't see a place where you would end up using it. मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज होगा, पर हर जगह नहीं होता. मतलब you can't, कुछ एसेस में यूज होता है, not every essay. And I'll tell you where we can use it. I'll give you an scenario. But वो mainly जो यूज होते हैं ना, वो होते भी concession and contrast है. तो हम उन पे आते हैं and we'll discuss them. Okay, sir. Okay. So, concession and contrast connectors होते हैं जब we are changing the tone. For example, अभी तक हम positives की बात कर रहे हैं, अब हम negatives पे switch हो रहे हैं. That's when we use concession and contrast connectors. Basically, जब जो tone है हमारी वो change होने वाली है. We're going to talk about the other side. ठीक है? So, for example, anything you say, कि for example, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है. ऑनलाइन शॉपिंग इज बेटर फॉर इंडिविजुअल्स, बट इट्स बैड फॉर द सोसाइटी इन जनरल. क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे. अब मैंने पहले बोला इट्स गुड फॉर इंडिविजुअल्स बिकॉज हमारा टाइम सेव करता है, राइट? आई डोंट हैव टू गो टू अ प्लेस, आई डोंट हैव टू स्पेंड टाइम शॉपिंग. सो इट्स गुड फॉर द इंडिविजुअल. टिल नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, बट देन आई से इट्स बैड फॉर द सोसाइटी. अब सोसाइटी के लिए वो बैड है, तो यहाँ पे मेरा ना टोन चेंज हो गया. आई शोड अ कंट्रास्ट. तो ये वाले वर्ड्स है ना, वो कंट्रास्ट के वर्ड्स हैं. व्हेन योर टोन चेंजेस, व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, these are what we call concessions and contrast. इन सिनेरियोज में हम ये सारे कनेक्टर्स यूज करते हैं. अब ये कनेक्टर्स सिंपल हैं, पर इनकी यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल ऑफ देम have a slightly different usage to each other. Some of them are very complex as well. So you need to learn these connectors really well. अगर इनकी usage नहीं करोगे ना, तो ये कभी भी clear नहीं होगा. So we'll start one by one and clarify the usage. Where do I use which connector? ठीक है. सबसे पहले I'll start जो मतलब I use it a lot. The first connector is admittedly. Admittedly होता है, देखो मैं तुम्हारे को एक सिंपल सिनेरियो दूं तो जो मेरा मेन साइड है ना, उसके साथ नहीं admittedly लगता. Admittedly is used with my where I'm admitting something with the lesser side. For example, I'll give you an example. For example, you are saying mobile phones पे ऐसे, mobile phones should be banned or not.
So your opinion is should not be banned. Your main opinion is should not be banned. But पहले तुम बोलते हो मोबाइल फोन्स के कारण डिस्टर्बेंस होती है. So mobile phones cause disturbance. Now, if you look at these two lines, my main opinion is that they should not be banned. बट मैं एग्री करता हूँ, कोई मेरे को आके बोल रहा है देखो मोबाइल फोन्स कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, इनको बैन कर देना चाहिए. लाइक पीपल आर ट्रैवलिंग, पीपल टॉक लाउडली ऑन द फोन, पूरी डिस्टर्बेंस होती है, कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाती है एंड एवरीथिंग. सो आई एम एग्रीइंग विद दोज पीपल. आई एग्री कि डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, पर मेरा मेन ओपिनियन क्या रह रहा है कि उनको बैन फिर भी नहीं करना चाहिए. सो जब मैं अपनी वीकर साइड को एक्सप्लेन करता हूँ, तो जब मैं किसी से कुछ मानता हूँ जो मेरा ओपिनियन नहीं है, पर मैं उनके साथ फिर भी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ कि उनकी मैं इस बात से मानता हूँ. व्हेन यू से समथिंग लाइक लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट. तुम किसी भी चीज को ऐसे नहीं करते हो, कंप्लीटली एग्री नहीं करते हो, तो तुम्हारे उसमें होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स. लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली अ फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्टेड. अब फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट होने से बिजनेसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा जो रोड के साइड पे थे. यू ऑल एग्री, क्योंकि सारे लोग ऊपर से जा रहे हैं तो उन बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा. तो मैं एडमिट कर रहा हूँ बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा, फिर भी मैं उस फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता हूँ. बिकॉज ट्रैफिक कम हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हुए, ट्रैवलिंग टाइम डिक्रीज हुआ, पोल्यूशन भी कम हुआ क्योंकि सारे जो हैवी व्हीकल्स थे वो ऊपर से निकलने लग गए. सो ऑल ऑफ दैट मेड लाइक ट्रैफिक रिड्यूस्ड. तो हालांकि उससे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट हुआ, कम हुआ, और मतलब इम्पैक्ट हुआ, आई स्टिल सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट फ्लाईओवर. सो एडमिट तुम करते हो जब अपनी मेन साइड नहीं, जो तुम्हारी वीकर साइड है या किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम एग्री कर रहे हो, तो तब हम एडमिटेडली यूज करते हैं. सो एडमिटेडली, जैसे अब तुम्हारा मेन ओपिनियन एग्री है, पर तुम बीच में डिसएग्री का कुछ लिखने लगे हो. पहले तुमने डिसएग्री के साथ भी तुमने पार्शियल बनाना है, तो जो नेगेटिव साइड के साथ तुम थोड़ा बहुत करोगे ना, डिसएग्री वाली साइड के साथ थोड़ा बहुत लिखोगे, वो एडमिटेडली करके लिखते हैं. So, I hope I'm able to clarify this. Now, let me show the usage. So, admittedly, there are certain drawbacks of mobile phone usage in public places. मैं admit कर रहा हूँ, I'm agreeing to someone that there are certain drawbacks. Main opinion मेरा क्या है? Not ban. So somebody is asking me to ban them. I say I am not agreeing with the ban, but I agree with you कि there are certain drawbacks. कुछ drawbacks हैं, पर मैं ban के favor में नहीं हूँ. So admittedly मैं उनके साथ agree कर रहा हूँ कि थोड़े बहुत drawbacks हैं. That's how you'll end up using it. ये connector जो use होता है, it's normally used at the beginning of the sentence, and then the weaker side comes. जो भी weaker side है, जो तुम्हारी less important side है, जिसके साथ तुम agree कर रहे हो पर तुम्हारा main opinion नहीं है, फिर वो आता है. This less side comes here. इसके बाद you can use any connector. When you're going to the main side, you probably use in. However, I do not support a ban on mobile phones. So this is your main side where you do not support a ban. इधर मैं however लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं concession दे रहा हूँ. देखो मैं एक तरह से concession दे रहा हूँ. मेरा main opinion है do not support a ban. So I'm using admittedly to give a concession कि कुछ drawbacks हैं, पर मैं एक support नहीं करता हूँ ban. So यहाँ पे admittedly use होता है ऐसे. Now, if anyone has any doubts regarding the usage of admittedly, please ask. Otherwise, this is used in this sentence. You can use it in agree, disagree essays when you're making partial. You can use it in advantage, disadvantage essays. Again, when you're making partial, your main side, let's imagine your main side is drawback somehow. तो तुम admittedly use करके कह सकते हो admittedly there are certain advantages. थोड़े बहुत advantages हैं. However, I believe the drawbacks are far more. तो admittedly के साथ तुम advantages की बात करोगे because your main opinion is drawbacks are more. So तुमने यहाँ पे advantages लिखते हैं. Admittedly there are certain advantages of something. सर जो जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे तो वहां पे एडमिटेड नहीं रहेंगे. नहीं, जिसके पॉइंट कम होंगे, जो मेरी मेन साइड नहीं है, उसके एडमिट करना है. देखो एडमिट हम कब करते हैं? देखो एडमिट करूंगा मैं उस बात से जो मेरा मेन ओपिनियन नहीं है. तो जैसे यूसुफ, you and I are having a fight. You are saying, for example, you are saying Indian cricket team is the best team. So मैं मानता, देख फिर मैं एडमिट करूंगा, हाँ मैं मानता हूँ इंडियन टीम अच्छा खेलती है, पर मेरे को नहीं लगता इंडियन टीम बेस्ट टीम है. अब मेरा ओपिनियन है कि इंडियन टीम बेस्ट नहीं है.
पर मैं तेरी इस बात से जरूर एग्री कर रहा हूँ कि इंडियन टीम अच्छा खेलती है, तो मैं एडमिट कर रहा हूँ। एडमिट होता है जो आपकी मेन साइड नहीं हो, जो आपकी लेफ्ट साइड हो, जो आप अपनी मेन साइड को थोड़ा सा वीकन कर रहे हो, उसके साथ एडमिटेडली यूज होता है। जो मेन साइड है, जैसे मेन साइड तो बैन नहीं करना है ना, देख बैन नहीं कर रहा हूं मैं, तो वो मेरी मेन साइड है, आई डू नॉट सपोर्ट अ बैन। ड्रॉबैक्स जो है मेरी वीकर साइड है, वो उसके साथ एडमिटेडली आता है। इज इट क्लियर? Yes. ओके। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट्स विद द यूजेज ऑफ एडमिटेडली, और इसको ऐसे यूज कर। सर यस। मान लो सर अपना इसमें ना डिसएग्री वाला, जो आप एग्री डिसएग्री कह रहे हो, हाँ, अपना पार्शियली एग्री करें तेरा मेन और ओपिनियन। पार्श ओके वेट, ऐसे कर, मेन ओपिनियन एग्री है कि डिसएग्री है, बता। मेरा पार्शियल एग्री में मैं एग्री कर रहा हूँ, एग्री वाला एक पैसेज बना दिया, हाँ, तो फिर मैं एडमिटेडली कर। एडमिटली लिख के और ना पार्शियल वाला जो मेरा है फिर मैंने वो डाल डाल दूंगा उसमें। हाँ, जो तेरा ऐसे होगा? साइड है, या जो थोड़ा सा डिसएग्री से मैच करता है, मतलब जो तेरे एग्री को थोड़ा सा वीक कर रहा है, ठीक है ना? ओके, मतलब मेन बात ये है जिस साइड में मैं हूँ वहां तो अपनी साइड पे ना लिख के, और जिस साइड में मैं नहीं हूँ उस मतलब थोड़ा बहुत हूँ हाँ, उस साइड में मतलब कि ये एडमिटली डाल वेरी दूं। गुड। हाँ, और ये जरूरी नहीं है कि अपनी साइड पहले लिखनी होती है, तो वीक साइड पहले भी लिख सकता है। तो तूने जो बोला, बस ऐसे? इसमें तो ये बोल रहा है ना, पहले अपनी साइड लिखनी है, वो जरूरी नहीं है, तो अपनी मेन साइड बाद में भी लिख ले। एंड वीक ओके साइड सर। तो पहले भी लिख सकता है ना, जरूरी थोड़ी है देखो वीक साइड बाद में ही लिखनी है। तो पहले वीक ओके साइड सर। लिख के अपनी मेन साइड बाद में लिख सकता है, तो जरूरी नहीं है एडमिटेडली सेकंड पैराग्राफ में आता है। एडमिटेडली कैन ऑल्सो कम इन द फर्स्ट पैराग्राफ, वेर एवर यू गिव द वीक साइड, द लेस वाली साइड जो तेरा मेन ओपिनियन नहीं है, उसके साथ एडमिटेडली लगता है। यस सर। ओके। नाउ अब दूसरे सेट ऑफ कनेक्टर्स करते हैं जो तुम्हारी मेन साइट के साथ लिखेंगे। वहां पे दो तीन कनेक्टर्स में यूज करता हूँ। वन आई शोड यू ऑल दो, however another connector that I use here is nevertheless. Nevertheless is also saying, nevertheless का मतलब फिर भी। देखो, अब अच्छे से समझो तो क्या हुआ, फिर भी मैं क्या नहीं मानता हूँ, फिर भी आई डू नॉट सपोर्ट अ बैन ऑन मोबाइल फोन्स। देखो, हाँ मैं मानता हूँ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, फिर भी आई डू नॉट सपोर्ट अ बैन ऑन मोबाइल फोन्स। तो नेवरदलेस का मतलब है जो ऊपर लिखा है उसके बावजूद, लाइक आई डोंट केयर अबाउट व्हाट आई हैव रिटन इन द बैक, उसको मैं मानता हूँ कि ड्रॉबैक्स हैं, फिर भी मैं बैन सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो जब तुमने अपनी मेन साइड लिखनी है, यू कैन यूज द कनेक्टर हाउएवर, यू कैन यूज द कनेक्टर नेवरदलेस। सो ये दोनों यूज हो सकते हैं। अभी तक ये बात क्लियर हुई? कोई डाउट है तो बताओ। Sir, that means however and nevertheless is the synonym. Synonym for each other, yes, you can use it as synonyms. Okay, any doubts? No, sir. No, sir. नेवरदलेस सर फिर से बता दो। तो नेवरदलेस के बाद तूने अपनी मेन साइड लिखनी है। देख, ओके। हाँ मैं मानता हूँ, देख तूने यहाँ पे क्या बोला, हाँ मैं मानता हूँ थोड़े बहुत क्या है ड्रॉबैक्स है, ठीक है, मान लिया तूने, ठीक है। यस सर। फिर भी तू क्या नहीं सपोर्ट करता है? यस सर। फिर भी तू सपोर्ट नहीं करता है कि मोबाइल फोन्स को क्या करा जाए, बैन कर। बैन। तो फिर भी के लिए तू क्या वर्ड लिख रहा है? नेवरदलेस, ठीक है। ओके। तो देखो, जहां पे मैं यूज कर रहा हूँ वहां पे उसका सिनोनिम है, हर जगह सिनोनिम नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई दैट ब्लाइंडली टू एनी अदर प्लेस। इट इज यूज्ड हियर इन दिस कनेक्ट, इन दिस सेंटेंस, ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये ये भी सर कम वाली साइड में ही आएगा, ज्यादा वाली साइड जिस में साइड आता में है ना, मैं देख, ना कल कम ज्यादा एग्री वाली कर रहा हूँ। साइड, ज्यादा वाली साइड या मेन साइड में आता है। मेन साइड में आता है हरमीत, नॉट ऑन द लेस वाली साइड। सर कंफ्यूज हो गया सर इसमें। क्या कंफ्यूज हो गया? देख, लेस वाली साइड में एडमिटेडली आता है, मेन साइड में या तो हाउएवर लिखना है या तो नेवरदलेस लिखना है। हाउएवर तो सर कंट्रास्ट में आता है। तो कंट्रास्ट ही तो हो रहा है, कंट्रास्ट हाँ। तो हुआ। पहले तूने क्या लिखा, ड्रॉबैक्स, अब तू बैन नहीं कर रहा, अब मतलब अब तो फायदे बता रहा है, तो कंट्रास्ट ही हुआ ना। अब तेरी Sir, मेन साइड ही पहले तेरी लेस साइड। sir, Yes. you better write however slash nevertheless. Then we all can easily understand this. या बट आई हैव However टू slash. the other ones also. Okay. Now it's Okay. all now it's clear for all.
maybe. No doubt. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है. Now let's come to the next one. सिर्फ however और nevertheless नहीं है. There are some other words also you can use. Despite. अब despite को कैसे use करते हैं? So for example, I'll take the same example. Despite does the same thing as however and nevertheless, but उसका usage थोड़ा सा use करने का तरीका different है. इसमें तुम्हें पहली साइड mention करनी पड़ती है. So how would I end up writing it? Despite the drawbacks mentioned above, I do not support a ban on mobile phones. इसको ऐसे यूज करते हैं. अब इसको समझो, काम ये सेम ही कर रहा है. देखो बोल क्या रहा है, बावजूद जो ऊपर मैंने ड्रॉबैक्स लिखते हैं उसके बावजूद मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ बैन को. मतलब तुम्हारा मेन ओपिनियन क्या है कि तुम बैन को सपोर्ट नहीं करते हो. डिस्पाइट लिखना है, ऊपर वाली साइड को भी मेंशन करना है. कैसे? डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स मेंशन्ड अबव, उनके बावजूद, जो ऊपर मैंने ड्रॉबैक्स लिखे उनके बावजूद मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ. मतलब मैं मानता हूँ ड्रॉबैक्स हैं पर मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ बैन को. सो डिस्पाइट इज यूज लाइक दिस. इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मेन साइड. पर डिस्पाइट को जब यूज करते हैं ना, तो पहले सेंटेंस के अंदर जो पहला हाफ है कॉमा से पहले तुम्हें लेस साइड बतानी होती है. देखो मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक अ कंप्लीटली डिफरेंट एग्जांपल. एक स्मॉल सा एग्जांपल देते हैं. ठीक है. लेट्स इमेजिन समबडी वाज सिक. ठीक है. फिर भी उसके क्या आए, बहुत अच्छे बैंड्स आए. सिक ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. कोई बीमार था. ठीक है. उसके बैंड्स फिर भी क्या है, ही स्कोर्ड वेरी गुड बैंड्स. ही स्कोर्ड एक्सीलेंट बैंड्स. अब कैन यू सी that there's one problem and this is my main side. My main side है कि उसके बैंड्स कैसे आए, एक्सीलेंट. हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंड्स कम आएंगे क्योंकि वो क्या था, सिक था. ठीक है. अब ये कैसे यूज, इसको कैसे यूज करेंगे? सो देखो यहाँ पे, यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ however he scored excellent bands. देखो he was sick on the day of the exam. वो बीमार था. ठीक है. however he scored excellent bands. यहाँ पे इसकी जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, nevertheless he scored excellent bands. फिर भी उसके अच्छे बैंड्स हैं, फिर भी उसके बहुत अच्छे बैंड्स हैं. So you're using nevertheless like this. And you can also use despite being sick on the day of the, सर yes. अगर अपन इसी को वैसे बनाए तो ऐसे बनेगा, एडमिटली ही वाज सिक ऑन द डे ऑफ एग्जाम. उसके बाद भी एक कनेक्टर लगा के, हाँ, उसके बाद भी एक कनेक्टर लगा के और ये ऐसे आ जाएगा. हाँ ही. अब ये सेंटेंस ना सर जी ठीक है ये? अब दो दो कनेक्टर आ रहे हैं इसमें. देख ये तो तेरी लेफ्ट साइड होगी, ये तेरी मेन साइड होगी. बिल्कुल ठीक हाँ है. जी. हाँ मतलब जब ओके. ठीक है. अब तूने नेवरदलेस सीख लिया, एडमिटेडली भी सीख लिया. अब डिस्पाइट, यस सर. डिस्पाइट कैसे करते हैं? डिस्पाइट क्या करता है, डिस्पाइट भी मेन साइड के साथ ही होता है. तो देखते ही मेन ओके साइड जरूर क्या है. आ गया. ओके. सो मेन साइड है ही स्कोर्ड एक्सीलेंट बैंड्स. बावजूद के वो बीमार था, ही स्कोर्ड एक्सीलेंट बैंड्स. मतलब इस बात के बावजूद के वो बीमार था ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, ही स्कोर्ड एक्सीलेंट बैंड्स. सो यस सर. यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ लगता है ऐसे. यहाँ डिस्पाइट लगता है, यहाँ डिस्पाइट का एक सिनोनिम है. यू कैन आल्सो यूज इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक. डिस्पाइट. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू यूज दिस. दिस इज आल्सो कमिंग विद द मेन साइड. दिस इज आल्सो नॉट कमिंग विद द लेस साइड. सो आई होप इट्स क्लियर. अगर किसी को अभी तक डाउट्स हैं बताओ. इनकी यूजेज इंपॉर्टेंट है. सी कनेक्टर्स कराने मेरे लिए बहुत इजी है, मैं तुम्हें लिस्ट दे देता हूँ, पर उनको कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब Sir, अगर after class, can we get this या answer sheet? फॉर द पीडीएफ, दैट इज नॉट एन इश्यू. अभी मेरे को ये बताओ, इज दिस कनेक्टर क्लियर? Sir, यस. excuse me. Yeah, this admittedly and nevertheless coming in same sentence. नो नॉट द सेम सेंटेंस. No. सी ओके. Now, there is admittedly he was sick on the day of the exam. Then, nevertheless, he scored ये excellent एग्जांपल bands में like that. this example they'll come back to back, but two different sentences, right?
They're coming together, but two different sentences After the full stop. after full stop. Yes. Nevertheless doesn't join sentences. But sir, I have a doubt. Sometimes we use however after comma. That means in graph. When we use the Okay. however, No, we don't use it like that. I'll explain the usage of however after comma. That is wrong, but I'll clarify how to use it correct. There is a after comma it can come, but I'll show you how it comes. Okay, just hold on. Okay, so I think I made it confusing, a bit confusing. So I'll give an example. Let's take an essay. For example, let me take an essay. My essays, some people, I'll take a very easy essay to explain. Okay. If you want me to take a difficult essay, you will not understand it. So let's not go there. Some people think that mobile phones should be banned in public places. It's an IELTS essay. Let's just do this. Okay. Do you agree or disagree? So now my opinion, please listen to my opinion. My opinion is a partial opinion. I'm saying there are certain drawbacks of mobile phone usage in public places. So I agree that there are certain drawbacks, but I do not support a ban on mobile phones. But I do not want them to be banned in public places. Yes. So now, is my opinion clear? Does anyone have a problem with my opinion? If it's not clear, please let me know. Is it clear? Yes, yes, sir, clear है. Clear. Now, if I have to attempt this essay, how would I attempt it using the connectors I just taught you? So first, I'll make a paragraph with admittedly. First body paragraph with admittedly. Admittedly, I'll say there are certain, and I missed here, downsides or drawbacks. So admittedly, there are certain downsides of mobile phone usage or using mobile phones, in public places. And then I'll explain the drawbacks and I'll use my listing points to, for example, to begin with, in addition, I'll give 2 points. That's how I'll end up doing. That's what I've taught you till now. Then when I come to the next paragraph, I'll start by saying, nevertheless, or however, I do not support a ban on mobile phones for the following reasons. So I'm not going to ban them for the following reasons, and then you're going to give the reasons. And then you can use the connectors firstly. The second reason is that, and then you give your points like that. In addition, finally, like that, or some other besides that, finally. Sorry. This is what I taught you till now. If you have any problems, please let me know now. no sir. Rennie, are you clear now? Sir, this is for partial, admittedly, and nevertheless will come in partial as well. Okay, see, Rennie, we are doing which connectors now? We are doing concession connectors now. All concession connectors are in partial. They cannot be used anywhere else. Concession means contrast means partial. Okay, all the connectors that we are doing right now are concession and contrast connectors. Concession and contrast connectors will be used in partial only. They cannot be used in one-sided. फिर तो contrast है ही नहीं ना. Contrast means when you go to the other side, if you don't have an other side, how would you use these connectors? Yes, yes. Clear? Yes. Okay. Now, abhi tak now, if anyone has any doubt, okay, I didn't see chat, but anyone has any doubts, please let me know till now. No sir. The usage. They're generally asking, can we use like connector in
starting of paragraphs? No, I use it for the second. Here I'm using it for the starting of paragraph, right? Here also I'm using it in the starting, but listing down point wala मैं second sentence में use करता हूँ. See, I'm using admittedly at the beginning of the paragraph, but when I'm listing down my points, right, that is starting in the second paragraph. जो मेरे points शुरू हो रहे हैं. Point number one, point number two. So Yes, admittedly, sir. I'm using at the beginning, but these connectors to begin with, in addition, I'm using in the second sentence and then when my second point starts. Clear? Okay, So sir. you do end up. Sir, like, uh, admittedly, there are many reasons for the following problem. This is correct? What's the other side? What's the opposite of this? What's the main side? So No, sir, for like I'm generally asking for starting of paragraphs. Like when we start the paragraph, the main reasons are. okay, so see ऐसे नहीं सोचना पता है गलत ये गलत है मैं बताता हूँ क्यों एडमिटेडली कब यूज होता है एडमिटेडली कब यूज होता है जब बाद में ना आपकी ऑपोजिट साइड आनी है यहाँ पे कोई ऑपोजिट साइड नहीं है यहाँ पे आपकी एक ही साइड है बहुत सारे रीजंस फिर आपने सॉल्यूशंस लिखते हैं यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं आएगा देयर आर मेनी रीजंस देखो एडमिटेडली कब आएगा जब आप कोई कंपैरिजन करना चाहते हो कंपैरिजन होना चाहिए अगर बाद में कंपैरिजन नहीं है तो एडमिटेडली यूज नहीं होगा Okay, sir. ओके सो Yes, sir. you are thinking only in one context don't think of it single paragraph think of it as the whole essay बाद में कुछ उल्टा लिखना है इसके तब एडमिटेडली का सोचना अगर इसके बाद में उल्टा नहीं लिखना तो नहीं सोचना Okay, sir. ओके अब मैं यही बात करा रहा हूँ देखो यही बात अब देखो you all learned it till now supposedly you do not want to use nevertheless and however same essay you're writing I'm teaching you another connector that you can use here. So another connector that I end up using here is despite or in spite of. So how do I use despite? So despite or in spite of. In spite of is three words. Despite gets the words combined. In spite of the drawbacks mentioned above. That's how you end up using it. It's a synonym for nevertheless or however, but it comes like this. In spite of the drawbacks mentioned above. See, अगर तुम however को देखोगे और nevertheless को देखोगे वो ऐसे नहीं आता वो सीधा ऐसे स्टार्ट होता है however I do not support a ban ठीक है nevertheless भी ऐसे आता है I do not yes despite or in spite of drawback, this is a passive voice, passive from. sorry repeat Is this passive from or active from? Despite or in spite of drawback mentioned above. this is nothing I do not support a ban is active ये तो है ही नहीं ये सेंटेंस ही नहीं है ये तो बस कंट्रास्ट है इसका कुछ नहीं है this is a part of the sentence it's not active this is not a sentence in itself so active passive की बात नहीं होती there's no verb here okay I Then do what not is the what is the basic difference between however, nevertheless, or despite or in spite of usage drawback? different है उनको यूज करने का तरीका different है देखो meaning तो same. Meaning मीनिंग तो same. सेम है हाँ पर उसको यूज करने में सी यहाँ पे मैं नहीं लिखता nevertheless drawbacks mentioned above डिस्पाइट में मुझे लिखना पड़ता है drawbacks mentioned above बाद में मतलब सेम ही आएगा पर वो उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है यूजेज इज इट क्लियर Meaning is the same. meaning is the same you end up using it for the same thing you don't end up you use them at the same place also but उनको यूज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा जो पहली वाली साइड Drawbacks. हाँ ठीक है लाइक दैट जैसे यहाँ पे अगर मेरा एक ही पॉइंट होता डिस्टर्बेंस despite this in spite of the disturbance caused by you get it देखो मैंने downside को बता दिया in spite of the disturbance caused by mobile phones I do not support a ban on mobile phones so like that मेरे को तो however और nevertheless अच्छा लगा क्योंकि इसमें grammatical mistake होने का चांस कम है. I totally agree but see I want to teach you everything and पता क्या रीडिंग में आ जाएगा रीडिंग में आ गया तब भी क्लैरिटी होना चाहिए ना कि इसका मतलब
Yes. तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया जरूर हो. If you're more comfortable with however, nevertheless use that, but have an idea so that if Yes, even sir. if it comes in reading, you're able to make sense of your sentence and attempt the question. Okay. So basically, whenever we are writing despite or in spite of, we state a reason before that, right? Like After that, despite being cold, she still had ice cream. Despite, yeah. right, Perfect, right. perfect. Okay, and however is simply when you state your reason that however that I don't support a ban on mobile phones. So you get clear cut with however and despite me you have to place a reason. हाँ. I get that. I get that. ठीक है. Okay. Done. ठीक है. Okay. तो डिस्पाइट में पहले प्रॉब्लम लिखनी पड़ती है. However, में प्रॉब्लम पिछले पैराग्राफ में मेंशन है. You don't have to repeat the problem like that, right? Okay. So another connector that I end up using here, which you can use, is although. Although भी despite की तरह ही है, पर यहाँ पे लिखना पड़ता है although there are certain drawbacks of mobile phones. I do not support a ban. अब इनमें भी क्या फर्क है? यूजेज में ही फर्क है. ठीक है. फर्क क्या है यूजेज में? सी डिस्पाइट ना एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है. तो डिस्पाइट के बाद ना यहाँ पे नाउन फॉर्म करके लिखना पड़ता है. जैसे यहाँ पे नाउन फॉर्म लिख दिया डिस्टर्बेंस या ड्रॉबैक्स मेंशन्ड अबव. ऑल्दो इज नॉट एन एडजेक्टिव. तो ऑल्दो के बाद यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस आता है. ये तो तुम्हें आता है. ऑल्दो देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ मोबाइल फोन्स. ओके. ऑल्दो मोबाइल फोन्स कॉज डिस्टर्बेंस. सो यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस आता है. ऑल्दो भी यूज हो सकता है. और ऑल्दो का एक सिनोनिम यहाँ पे वाइल भी यूज हो सकता है. तो यू कैन यूज देम ऑल्सो. मैं कह रहा हूँ यहाँ सब कुछ यूज हो सकता है. सबकी यूजेज थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है. You have to get comfortable with the usage of these words and use them properly. If they don't make sense in English, they are not going to fetch you bans. If they're not grammatically correct, they are not going to fetch you bans. So grammatically ठीक होना चाहिए. जो मर्जी यूज करो, grammatically ठीक रखो. All of them are used for the same purpose in the end. Okay. अब मैं सारे करता हूँ and I'll tell you why. See, one, I use it in my conclusion. Once, I use it in the middle of the paragraph. Once, I use it in the introduction. तो मैं तो तीनों प्रिपेयर करके जाऊंगा. अगेन मेरे यहाँ पे 3 सेट्स हो गए. ये तीनों सेट्स मेरे को हेल्प करते हैं. एक सेट मेरा इंट्रोडक्शन में आ जाता है, एक सेट मेरा कंक्लूजन में आ जाता है, एंड एक सेट मेरा बीच में बॉडी पैराग्राफ में यूज हो जाता है. तो मेरी रेपिटेशन नहीं होती है कनेक्टिव्स की. दैट इज वाई आई एंड अप टेलिंग यू लर्न एवरीथिंग, ताकि कुछ भी कहीं पे भी यूज कर सको कंफर्टेबल. ठीक है. अब अगर तुम्हारे को इसको डाउट हो रहा है तो ना वी कैन प्रैक्टिस देम मोर, बट दीज आर द कंसेशन कनेक्टर्स दैट वी एंड अप यूजिंग. ठीक है. एक बार मेरे को कंक्लूजन के कराने दो, क्योंकि कंक्लूजन के बहुत छोटे हैं. उसके बाद वी कैन कम बैक टू इट इफ यू वांट. एंड हाउएवर वाला एक डाउट था समीम का, आई विल एड्रेस दैट डाउट आल्सो फॉर हाउएवर. कंक्लूजन में these are the connectors that I end up using. You can also use them. Another one. चलो बताओ. Which one do you think will you end up using? In 5 में से तुम्हारा favorite क्या? I leave it to you. Which one would you think? In conclusion, In In conclusion, conclusion. Okay. Anyone? Okay. Anyone to put it in a nutshell? Now I'll try the last one. This is a new one to No. put it in a No, wait, okay. don't try it. But I'm asking Okay. anyone would like using it. So मैं बताना चाहता हूँ, to put it in a Okay. nutshell is informal. So although it Okay. sounds very impressive, don't do it. oh, informal. Informal है. See, here simplicity matters. I know. I can tell you very, very exciting connectors. But if they don't, if they result in a loss of bands, what's the point? So to put it in a nutshell, will not fetch you more bands. In fact, the bands will decrease because it's not a formal connector. Please use any of the first four. All of them are fine. Okay, any of them will work. I don't have a problem. Please don't use this connector. So just telling Okay. you, don't go for the exciting thing. Go for the normal Okay. and boring thing here. Okay. Okay. no, sir, Totus, in conclusion, I would like to reiterate that Yeah. that Yeah. You can yes, do we that. know. Yeah. So I'm just repeating that. Yes.
We remember. I'll tell you something. When I started teaching, I taught to put it in a nutshell. My Okay. favorite. It took me 2 years to learn that to put it in a nutshell was I not would like to because reiterate. yeah. So you get the point. Okay. Now he had a question. I told you, however, doesn't join sentences. It's a new sentence. So he had a question with me. Sometimes we use however in the middle of a sentence. Now let me give us example. He had a cold. However, he went to the party. Now I'll use this however in the middle of the sentence. Please look here. Now tell me this sentence, I'm comparing with which sentence? Please tell me this if it's clear. Both are correct. First is also correct, second is also correct. Because they're both doing the same thing. Now just tell me which one do you think why is the second one correct? Here the however is not in the middle. It's not at the beginning, it's in the middle. Still it's correct. Why? Because the comparison is still with the first sentence only. However is not comparing with he. He is not being compared with went to the party. He went to the party is being compared with he had a cold. That's what the comparison is. So please understand the comparison matters. Even if it's used in the middle, like that doesn't mean that the comparison is happening between this part and this part. This comparison is happening with the first part of the sentence, not the second part. Like not here and not this. However, still comparing this. So anyone have any doubts here, please let me know. So Sameem, are you clear? Your doubt is clear? I'll use a sentence again just to give you clarity. Now, this is a correct sentence. Anyone has a doubt here, please let me know. ये मेरे को बताओ, ये sentence का comparison किसके साथ हो रहा है? Just answer that and that will address your question. लैपटॉप के साथ Increase. लैपटॉप के साथ ही हो रहा है ना? It's not ये वाले पार्ट के साथ नहीं हो रहा. तो however sentence के middle में भी आ सकता है. ठीक है, बात ये है कि comparison first half के साथ ही हो रहा है. Do you get कि however middle में कैसे आ जाता है समीम? Is it clear? See, however, is contrasting with laptops की sale may increase. Sales of mobile phones decreased. The comparison is that. I'm not comparing mobile phones in decreased. That is not the comparison. So, however, sentence के middle में आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि sentence का first part and second का sentence का second part compare हो रहा है. First sentence and second sentence ही compare हो रहा है. That is why however can come. इसको बस usage है. देखो however you can put it at the beginning of the sentence also. बस वो यूजेज है ना. इंग्लिश अलाउ करता है, अगर तुम मिडिल में भी डालना चाहते हो मिडिल में डाल लो. इंग्लिश डजंट टेल यू एनीथिंग. इंग्लिश इज कंफर्टेबल विद इट. हाउएवर सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स डिक्रीज्ड. अगर तुमने मिडिल में डालना है मिडिल में डाल लो. इट्स ओके विद इंग्लिश. लाइक द लैंग्वेज इज फाइन. डजंट harm the language or doesn't make it incorrect. Okay, please let me know the doubts or anything else you want to ask here. ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे को एक एडवाइस देता हूँ. देखो, फॉर कनेक्टर्स I would ask you okay, please end up like I learn everything. The usage I know how to use. So एक बार सबकी usage सीख लो कैसे करते हैं. They're not difficult to learn. ठीक है, और कैसे सीखना है, you can learn if you want to learn. I can give you certain example sentences and you can learn it from that. Or you can practice them when you write your essays and send them to ma'am. So practice it. Just send your essays उसमें ये connectors try करके लिख लो. अगर गलत होंगे मैम उनकी ग्रामेटिकली उनको करेक्ट कर देंगे. And you'll come to know that you're not using them correct grammatically. So you can practice all of them. I'm sharing this file with you. So you have a list.
You can prepare it like that, I would just say. ठीक है. बाकी अगर तुम ऐसे टाइप वाइज पूछोगे, मैं ऐसे टाइप वाइज भी इनको ब्रेक डाउन करके बता दूंगा. दीज आर द सर कनेक्ट. क्या? सर जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज में, यस. तो अगर जैसे डिसएडवांटेज कम है, हाँ देयर आर सर्टेन. हाँ, तो ये यूज कर लिया. एडमिटेडली देयर आर सर्टेन डाउन साइड्स ऑफ जो भी है. ठीक है. फिर तो हाउएवर भी लगा सकता है, डिस्पाइट भी लगा सकता है. तो कुछ भी कर ले. डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स मेंशन्ड अबव, आई बिलीव दैट जो ये मेन टॉपिक है फायदेमंद है. दिस इज बेनिफिशियल. Like, you get the point. See, advantages are more, right? So you can write, despite the disadvantages mentioned above, I believe the advantages are more. I believe it is advantageous. जो चीज है, that is help, that is beneficial. So you can use सर that. Yes. एडमिटेडली एंड डिस्पाइट Admittedly इन. left side के साथ है. Despite main side के साथ है. डिस्पाइट तो बाद में आना है ना. देख, डिस्पाइट एडमिटेडली की जगह नहीं आना है. देख, डिस्पाइट में हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, पर वो आता किसके साथ है? मेन साइड के साथ आता है. देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. देख, आई गिव यू एन एग्जांपल. देख, तूने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में पूछा ना. देख, सो पहले आई राइट एडमिटेडली देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स. ठीक है, डन. यस. अब डिस्पाइट लिखना है. देख, डिस्पाइट के बाद बोलूंगा, डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स मेंशन्ड अबव, I believe credit cards are beneficial on the whole. अब तो एक बार देख, तो ये मत देख, मैंने इसके बाद ये लिखा है ड्रॉबैक्स मेंशन्ड अबव. एक बार इसको इग्नोर कर. डिस्पाइट आया किसके साथ है? मेन साइड के साथ आया. मेन साइड तेरी क्या है? क्रेडिट कार्ड्स आर. बेनिफिशियल. पर उसको लिखने के तरीके में मुझे ड्रॉबैक्स भी लिखना पड़ता है पहले. पर ये नहीं मतलब कि वो लेफ्ट साइड के साथ आता है. आता वो मेन साइड के साथ ही है. इज इट क्लियर? यस सर. तो मेन साइड तो तेरी ये है ना कि क्रेडिट कार्ड्स आर बेनिफिशियल. उसके साथ ही डिस्पाइट है, बट लिखने के तरीके में मुझे लिखना पड़ रहा है कि डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स मेंशन्ड अबव. तो यहाँ पे अगर ये नहीं लिखना चाहता था तो तू हाउएवर लिख सकता था. हाउएवर आई बिलीव क्रेडिट कार्ड्स आर बेनिफिशियल ऑन द होल. इज इट क्लियर? यस. सर यस. दैट मीन्स एडमिटेड के साथ हम एक पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे फर्स्ट. हाँ. Then second paragraph में we will write however, nevertheless, like this. Yeah, I always write the less Not side not first. not after this sentence we will write however. We will write however after the complete paragraph. Yeah. Okay. Yes, sir. So I think some of us do not realize this. Some are thinking that we should write this sentence after this sentence, not this sentence यहाँ after पे this दिया paragraph. paragraph. Yeah, the whole Yes, sir. paragraph is going to come. Then Whole you're going. paragraph. That's why they are not. Some of us are not realizing that why we use despite the drawback again No, mentioned the whole above. paragraph. You're right. The whole paragraph is going to come here. Right? You Yes. understand. Not writing immediately afterward. You're giving a lot of space and then writing. Writing the Yes, whole sir. paragraph and then coming to it. Okay. So Sir, then why when we use furthermore, moreover, that like is for this? points. Right? Now you have points. You're going to give points here. So first point to begin with. Second drawback, furthermore. Clear? Then And like this this. is only for the partial to our. No. Furthermore, moreover, you can use this No. I am all. not asking about the furthermore. Two points are Admittedly fine. and Rennie, 2 yeah, points are fine. admittedly and despite the drawbacks. Yeah. Now you have to give here again. Firstly, the second advantage is Firstly, that, another yeah, addition, finally. additionally finally. Lastly, These are for listing down points. These are comparison connectors. Admittedly and despite are comparison linking words. To begin with and furthermore are for giving the points. So you're giving the first drawback here.
Now you're giving the second drawback. Here, you're giving the first advantage. See, your main point is advantages now. You're giving the first advantage, then the second advantage, then the third one, then the fourth one. These are for your points. These are for connect. Like, you get the point? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Is it clear, Reni? Yes, yes. Sir, for graph, can we learn some connectors for graph? Graph I'll cover, but they're completely different. I'll cover the next class. Okay. I'm only taking the class tomorrow, from tomorrow. So I'll cover them this week itself. Hello, sir. Yes. Mega sir, when we use comparison, then we use these type of connectors. Yes, we use these connectors when we are making contrast and comparisons. However, admittedly, never. Contrast and comparison. Then we use these type all types of comparisons. Yeah, any Connectors. comparison, any connector. These are comparison connectors. These ones. ये जो list है. Okay, sir. Okay. 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 Anyone else? Any doubts? Excuse me, sir. Yes. Sir, I am not having doubt in these connectors, but I want tips regarding reading. I am lacking in reading. I'll cover reading also. Tomorrow I'll cover reading. Tomorrow reading, day after tomorrow I'll cover the connectors for this thing. Is it clear? Okay, sir. What's the time like Same for time reading tomorrow. class? Same time, 5 o'clock. Okay, sir. Every day the class will be at 5 o'clock in the evening. Okay. Okay, sir. Okay. Okay. I hope it is clear. Anyone, if you have a doubt, please practice them. And I said, you practice in your essays. There's no better place to practice them. Usage of these words is really important. Okay, usage is more important rather than and randomly don't use connectors. See, मैं तुम्हारे को एक बात सिखाता हूँ तुम ना ये बात बड़ी important है and people don't pay attention to this. So I'll show you this. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. So it's yes. Yes. Okay, good. So, I'm not oh, able to see. you're not able to see? No, I was not showing you anything. Okay. Now you can see? Yes. Yes, sir. Okay. So Cohesion these and are coherence. this is the band descriptors. Cohesion and coherence is basically the link in words. Okay. So मैं एक बात बताना चाहता हूँ देखो एक बात तो ये है कि ना overuse of connectors also loses you bands. How do I know this? So read this. Uses cohesion in such a way that it attracts. No attention. So if you overuse connectors, then they're going to grab attention. So a lot of you have a habit कि बस connector लगाना ही लगाना है लगाना ही लगाना है लगाना ही लगाना है. You Yes, overuse sir. connectors. पता है मैं ये Yes, पढ़ता sir. हूँ graph. You have to put a connector everywhere. It is not required. कोई comparison नहीं हो रहा बस एक connector से start कर देते हैं. That will not fetch you more bands. उसका reason आना चाहिए connector का. जब reason नहीं बनता कोई connector नहीं लगाना. You're going to start simply. ठीक है यू ऑल डू रीडिंग राइट अब मेरे को रीडिंग बताओ चेक द रीडिंग वंस अपनी ना रीडिंग बुक खोलना चेक करना तुम देखना कितने पैराग्राफ्स कनेक्टर्स के स्टार्ट होते हैं कुछ होते हैं बट नॉट एवरी वन यू पुट इट एवरी प्लेस से ज्यादा बैंड्स नहीं आएंगे तो प्लीज ये बात याद रखना कनेक्टर्स को ऐसे यूज करते हैं कि वो अटेंशन ना ग्रैब करें उनको तभी लगाना है जब वो हमारा काम इजी करते हैं जब वो पढ़ने को इजी बनाते हैं नॉट बिकॉज कनेक्टर लगाना है इसलिए लगा रहा हूँ ओ मेरा मतलब you feel like okay I've started the paragraph without a connector let's put something here don't do that use connectors they are meant to be used but मतलब जहां पे बनता है वहां पे We have to use it necessarily. यस नॉट अननेसेसरीली बिना बात के नहीं लगाना है ठीक है अगर ज्यादा लगाओगे बैंड ज्यादा नहीं आएंगे 9 बैंड के लिए तो लगाना ही नहीं चाहिए ज्यादा उस टाइम पे तो ऐसे यूज करना चाहिए कि पता ही ना चले यूज करा है तो कम से कम कनेक्टर लगाते हैं मतलब कम भी नहीं लगाना ज्यादा भी नहीं लगाना उसका बैलेंस ढूंढना होता है बैलेंस ढूंढ के लगाना है ठीक है ओके टुमारो देयर विल बी अ रीडिंग क्लास मैम कौन सी रीडिंग पे है
Can anyone tell me? Okay, I'll ask ma'am. So we'll continue with that tomorrow. Okay. I Sir, hope yes. this one type of essay we have discussed both views and your opinion. Yes. For this type of essay, both views, we can use this one. For both views, I use yes. For the first part, yeah, Yeah. for listing down Mm. points, you can use. And you can, Yeah. okay, for the paragraphs, I end up using on the one hand, on the other hand there. In that essay, I end Yes. up using on the one hand or on the other hand for the body paragraphs. Clear? For the first paragraph, I write on the one hand. For the On the second one paragraph, I write on the other. Okay. You can use these also, not a problem. But on the one hand and on the other hand is more suitable there. It just suits well there. Okay. I'll discuss it. Essay wise also I'll discuss it. Try to learn the usage. I'll try to tell you how to use it then and there. Okay. Tomorrow after the reading class, I'll take one short essay. Like I'll cover one essay and I'll show you the usage of connectors here. I'll take a random essay from the book, which is going to be partial, and I'll show you how I'll end up using how I'll use the connectors there. Is that fine? Okay. Done. So I'll stop here. See you all tomorrow. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. You're welcome. Thank Thank you, you. sir. You're welcome. Yes, sir.